Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you once again in your maths class. We are studying chapter 7, coordinate geometry from class 10th maths. We now know all the formulae related to this chapter. We know the distance formula, the section formula, the midpoint formula, and also we know how to find the area of a triangle when the coordinates of its vertices are given. Now today we will be doing the first 5 questions from exercise 7.4 based on all these formulae. So let us start with the first question, which says determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A and B with given coordinates. So here 2 points have been given. The first point is A with coordinates 2 minus 2 and the second point is B with coordinates 3, 7. On joining these 2 points, we get one line segment, and now this line segment is being divided by another line whose equation is 2x plus y minus 4 equal to 0, somewhat in this manner. Now in this question, we have been asked to find the ratio in which this line is dividing the given line segment. यहाँ हमसे पूछा है कि ये लाइन A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, और हम मानते हैं कि ये रेशियो है k:1. Let us assume the ratio to be k:1. Now actually this point of intersection, which we give it the name as P, it is dividing this line segment AB into 2 parts in the ratio k:1. And let us now take the coordinates of P as x, y. Now by section formula we can find the coordinates of this point P in terms of this ratio k. Now when we get the coordinates of this point P, how to get the value of k, because then the coordinates are also unknown and also the value of the ratio is unknown to us. So in this case we will use one more information. एक और information use करेंगे, और वो क्या है कि ये point P इस line पर lie कर रहा है, इस line पर ही तो located है, और क्योंकि ये point P इस line पर located है तो point P के जो coordinates हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इसका मतलब जो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे P के सेक्शन फॉर्मूला से, वो दोनों कोऑर्डिनेट्स जब हम x और y की जगह इक्वेशन में रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होगा, और ऐसे में हमें एक कंडीशन मिलेगी जिससे हम रेशियो k:1 फाइंड आउट कर सकेंगे. सो लेट अस नाउ प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन. इफ यू नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, you will get the visualization somewhat like this, where you will see this is point A with coordinates 2 minus 2, this is point B with coordinates 3, 7, and also this is the line with equation 2x plus y minus 4 equal to 0, and this line is intersecting this line segment at this point P, whose coordinates we have taken as x, y in the ratio k:1. I hope the situation is clear. Now we proceed towards the question. Here we have taken, let point P x, y lying on the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divide AB in the ratio k:1. We have assumed it. Then by section formula, coordinates of P will be, we first take the x coordinate. Yes, what is the formula? Let us recall, it is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. और यहाँ पर आप देखिए कैसे करेंगे. If we go back, k into 3, ठीक है, we multiply in this way, k into 3 plus 1 into 2. If we write here, k into 3 will be 3k plus 1 into 2 will be 2 itself upon k plus 1, adding the 2 parts of the ratio. Similarly, we can get the y coordinate. It is given by m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Again here we will multiply this k by 7 this time, because we are taking the y coordinate. So it will become 7k, and here 1 will be multiplied by minus 2 here, and so it will become minus 2. So the result will be 7k minus 2 upon k plus 1. We write here 7k minus 2 upon k plus 1. ये हो गए point P के x और y coordinates. Now we know that this point P is lying on this line whose equation is 2x plus y minus 4 equal to 0. So the coordinates of point P should satisfy this equation. We write here, since point P lies on the line with equation 2x plus y minus 4 equal to 0, its coordinates
must satisfy the equation of the line. So what does this mean? This implies that since 2x plus y minus 4 is equal to 0, तो यहाँ पर x की जगह हम रखेंगे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो हमें मिला है 3k plus 2 upon k plus 1. We write here 3k plus 2 upon k plus 1. Got it? Then plus in place of y we will place the y coordinate of point P, which is 7k minus 2 upon k plus 1. And then we have minus 4 equal to 0. Got it? Now we need to simplify all this. You will see that k plus 1 is there in the denominator. We can take it as the LCM. k plus 1 को LCM ले लिया हमने, तो यहाँ तो क्या होगा 2 3 ज़ा 6 k plus 2 2 ज़ा 4 as it is आ जाएगा ये, प्लस क्योंकि k plus 1 यहाँ भी है डिनोमिनेटर में तो ये एक्सप्रेशन भी as it is आ जाएगा 7k minus 2 और यहाँ पर 4 के साथ k plus 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ऑल दिस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, k plus 1 यहाँ minus 4 से मल्टीप्लाई हो गया. ऑन सिंप्लीफाइंग दिस विल बी 6k plus 7k plus 4 minus 2 will be 2 minus here we will have minus 4k and minus 4 into 1 will be minus 4 and this will be equal to 0 क्योंकि k plus 1 को जब आप RHS में ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही बचेगा. So again on simplifying what we will get, just have a look. This will be, now the like terms are 6k, 7k and minus 4k. 6 plus 7 it's 13 and 13 minus 4 it's 9. So we will have 9k and 2 minus 4 will be minus 2 equal to 0. This gives us k equal to 2 upon 9 and this implies that the required ratio is 2:9. देखिए आप, हमारा रेशियो क्या था k:1, यही हमने एज्यूम किया था और k की वैल्यू हमें मिल रही है 2/9:1. सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9 यू विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियो एज 2:9. 9 और 9 यहाँ कैंसिल हो गए, 2:9. सो दिस इज द answer to the question. We were asked to find the ratio and we have found it. We now move towards the second question. Find a relation between x and y if the points x, y, 1, 2 and 7, 0 are collinear. This means that the three points are lying in a straight line. और यहाँ पर हमें एक condition find out करनी है, या relation कह लीजिए, between x and y. Now since the 3 points lie in a straight line, this means that the area of the triangle formed by the 3 points will be 0 and we will be using this information here. We write the solution. Since the given points are collinear, this means they are lying in a same straight line, the area of triangle formed by them must be 0. Now this implies area of triangle. It is given by the formula half into x1 into y2 minus y3. I hope you have learnt it very well now, plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. This should be equal to 0 as per this question. Now you can take this half to the RHS. It will be multiplied by 0 on taking its reciprocal and it will be 0 itself. तो जब हम ये 1/2 को 0 के साथ उधर रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा और हमारे पास ये सेंट्रल एक्सप्रेशन ही बचेगा. सो वी कैन राइट इट हियर एज x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 minus y1 plus here we will have x3 into y1 minus y2. All this is equal to 0. बस अब यहाँ पर coordinates को रखते हैं. How to write? We take the x coordinate
ऑफ द फर्स्ट पॉइंट विच इज x itself, और फिर रिमेनिंग पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे 2 minus 0, 2 minus 0. Now the x coordinate of second point which is 1, और फिर remaining points के y coordinates का difference लेंगे किस साइकिल में, 1, 2 और 3. इस साइकिल में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस 1. ठीक है, याद है ना आपको. So here we are taking it as 1 here and then we will take 0 minus y. और फिर हम लेंगे थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो हो गया 7 और फिर y minus 2, difference of the y coordinates of the remaining points. This is equal to 0. Now this will be 2x. Here we will have only minus y and here we will have plus 7y minus 14 equal to 0. 7 को multiply कर दिया y से और minus 2 से. Now 2x and these two are like terms. 7 minus 1, it will be 6y minus 14 equal to 0. Now you will see that 2, 6 and 14, all the three are divisible by 2. So we can divide this equation by 2 and in doing so we will get it as x plus 3y minus 7 equal to 0. And this is the required relation between x and y. यही तो पूछा था. Find the relation between x and y if the 3 points are collinear, and this is the required relation. We can write here, this is the required relation between x and y. I hope it is very much clear to you. We can now proceed towards the next question. Find the center of a circle passing through the points 6 minus 6, 3 minus 7 and 3, 3. So here we are talking about a circle which is passing through 3 points. Let it be point A with coordinates 6 minus 6, then a point B with coordinates 3 minus 7, and let the third point be C with coordinates 3, 3. And here we have to find the center of this circle. ठीक है, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं जिनसे एक सर्कल पास हो रहा है और हमें फाइंड आउट करने हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स. फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली हमें फाइंड आउट करने हैं. लेट अस टेक द सेंटर टू बी पॉइंट O and the coordinates of the center be x, y. Now what is special about this point? Yes, it is at equal distance from all the 3 points. आप देखेंगे OA कह लीजिए, OB कह लीजिए और OC भी ले लीजिए, तीनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ दिस सर्कल. इस सर्कल के रेडियस हैं और इसलिए तीनों इक्वल होंगे डिस्टेंसेस. सो हियर वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. लेट अस बिगिन हियर. लेट द गिवन पॉइंट्स बी A, B and C with given coordinates. Let point O with coordinates x, y be the center of the circle passing through the given points. Now here we see that OA is equal to OB is equal to OC because all the three are radii of the circle. Radii is the plural of word radius, and so all the 3 distances will be equal. Since these are distances, here we will be using the distance formula. So first of all, taking OA equal to OB, we will proceed further. OA, देखिए आप, OA is the distance between the point A and O. तो उसके लिए ये है point A and this is point O. तो पहले हम यहाँ पर लेंगे स्क्वायर रूट और फिर x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस. इट विल बी x minus 6. So x minus 6 whole square plus. Now the difference of y coordinates, y minus of minus 6. It will become y plus 6. So I am writing it directly, y plus 6 whole square. Now find the difference OB. ये है point O और ये है point B. तो पहले हम लेंगे x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस. यहाँ पर है x, यहाँ पर है 3. So we take it as x minus 3 whole square. ठीक है. Then plus the difference of y coordinates. This is y minus of minus 7. So we can write it as y plus 7 whole square. Now on squaring both sides, we will get rid of this square root, and so we can write it as x minus 6 whole square plus y plus 6 whole square
equal to x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square. You can write here squaring both sides. Now you can open up this bracket by expanding using the algebraic identity. First number square minus multiply both the numbers by 2. So you will get 2 6 are 12x, and then plus second number square will be 36. Then y square plus 2 6 are 12y plus 6 square will be 36. Here we will have x square minus 2 3 are 6x plus 3 square will be 9, and here we will have y square plus 14y plus 49. I hope it is very much understood to you. Now we can cancel the like terms on both the sides. आप देखिए ये x square और x square cancel हो जाएगा, y square cancel हो जाएगा. Now we can simplify it. We will get it as minus 12x plus 12y plus 36 plus 36, it will be 72, and here we will have minus 6x plus 14y, and here we will have 9 plus 49, it will become 58. Now bring all these three terms to the LHS. It will become minus 12x plus 6x, like terms एक साथ लिख रहे हैं, 12y minus 14y, and then 72 minus 58. All this is equal to 0. सभी terms जब LHS में आ गई तो RHS में तो 0 ही बचेगा. Now we can again simplify it. It will become minus 6x, and here we will have minus 2y, and here we will have plus 12 minus 8, it's 4, then 6 minus 5, it's 1, 14 equal to 0. Again 6, 2 and 14, these three are divisible by 2, so we can divide by 2. It will become minus 3x minus y plus 7 equal to 0. या फिर आप यहाँ पर तीनों टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं ये पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 3x प्लस y minus 7 equal to 0, or we can write it as 3x plus y equal to 7. This is the first equation that we are getting. 3x plus y equal to 7. ये equation हमें कहाँ से मिली है? Here we had taken OA equal to OB. Now we can take OA equal to OC. So we proceed further and take OA equal to OC. This implies OA square is equal to OC square. We are squaring it at the first step itself. Now we need to find the distance OA. We know the coordinates of O are x, y. A के coordinates हैं 6 minus 6 और C के coordinates हैं 3, 3. Now we can find the distances easily. OA, we will take the difference between the x coordinates. It will be x minus 6 whole square plus then the difference between the y coordinates, it will turn out to be y plus 6 whole square. Y minus of minus 6 will be y plus 6. In case of OC, x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. As you can see, the differences, it will come out to be as written here. Now we can square these binomials. It will turn out to be x square minus 12x plus 36. ये हो जाएगा आपका y square plus 12y plus 36. This will be equal to x square minus 6x plus 9. Here we will have y square minus 6y plus 9. This is in the rough part, okay, the coordinates. Now we have to simplify. Like terms दोनों तरफ जो हैं उनको cancel कर सकते हैं. x square, y square cancel हो गए. Now we are having here minus 12x plus 12y plus 36 plus 36, it's 72. Here we have minus 6x minus 6y and 9 plus 9 is 18. Bring the three terms to the LHS. Minus 12x plus 6x plus 12y plus 6y plus 72 minus 18. This is equal to 0. This will be minus 6x and here we will have 18y and here we will have 12 minus 8, it's 4. And here we will have 54 equal to 0.
Again here we can multiply by -1. This will become 6x minus 18y minus 54 equal to 0. -1 से मल्टीप्लाई करने पर सभी टर्म्स का साइन चेंज हो गया. नाउ 6, 18 and 54, all the three are divisible by 6. So we can divide by 6. It will turn out to be x minus 3y minus 9 equal to 0, or we can write it as x minus 3y equal to 9. This is your second equation. Now we have got two equations. First we took OA equal to OB, तो हमें एक equation मिली. Secondly we took OA equal to OC, we got the second equation. Now just have a look at both these equations. आप दोनों equations एक बार एक साथ लिखिए, जिससे आपको idea लग जाए कि elimination method कैसे लगाना है. देखिए 3x plus y equal to 7. This is the first equation. And the second one is x minus 3y equal to 9. तो यहाँ पर अगर हम first equation को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों केस में न्यूमेरिकली y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, और आप देखेंगे एक प्लस में होगा एक माइनस में. तो ऐसे में हम जब ऐड करेंगे इक्वेशंस को तो y और y वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी विल बी मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड देन वी विल बी एडिंग द सेकेंड इक्वेशन. सो वी कैन राइट हियर multiplying equation 1 by 3 and then adding equation 2. We get first equation is 3x plus y equal to 7. इस पूरी equation को हम 3 से multiply कर रहे हैं. So it will become 9x plus 3y equal to 21. Then we are going to add the second equation to it. It is x minus 3y equal to 9. As you can see, x minus 3y equal to 9. Now add up both these equations. Here minus 3y and plus 3y will be cancelled. This will become 10x. Here we will have 30. So x will be equal to 30 upon 10 equal to 3. So we get the value of x equal to 3. So we have got the x coordinate of point O. Now we need to find the y coordinate of point O. For this we can place this value of x in equation 2. This is equation 2. So we write here substituting x equal to 3 in equation 2. We get 3 minus 3y equal to 9. ठीक है, यहाँ पर x की जगह हमने 3 रिप्लेस कर दिया है. This will become 3 minus 9 equal to 3y on interchanging the position of minus 3y and 9. ये minus 3y RHS में plus 3y और 9 इधर आके नेगेटिव हो गया. So this will be equal to 3y equal to minus 6 or y will be equal to minus 2. So this is the value of y. And what were x and y? These were the coordinates of the center of the circle point O. So here we can now write the coordinates of the center of the circle are 3 minus 2, or we can say hence the center of the circle is O 3 minus 2. This is the answer. Let us once again go back and have a look at this question. In the beginning we were asked that there are 3 points और उन 3 points से एक circle pass हो रहा है. This is the figure. और अब हमें यहाँ पर circle के coordinates find out करने हैं. We took it as O x y. Now this distance OA, OB and OC, all these three distances will be equal because these are the radii of the circle. So we took them equal. OA equal to OB equal to OC. और firstly हमने लिया OA equal to OB. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए हमें एक इक्वेशन मिली. सेकेंडली वी टुक OA इक्वल टू OC और फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई किया तो एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 2. बस अब एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जिससे x और y की वैल्यू मिल गई और उसी से हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट वी टेक अप क्वेश्चन नंबर 4. द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1 2 and 3 2. Find the coordinates of the other two vertices. So here we have to take one square. Let us draw one square. This is a square and here two opposite vertices have been given. Let us take this as point A, this as B
this as C and this as D. This is the square ABCD. अब यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्टिसेस हम मान लेते हैं, A और C दिए हैं. A के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 2 और C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 2. और अब हमें पॉइंट B और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. गेटिंग इट? Let us take the coordinates of point B as x1, y1 and that of D as x2, y2. तो ये coordinates हमें निकालने हैं. तो ये निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं properties of a square and the first property is that its sides are equal. तो हम यहाँ पर पहले ये यूज़ करेंगे AB equal to BC. First we use this property and then we will see how to proceed one by one. We write it here. Let ABCD be a square with opposite vertices A and C. Let the coordinates of vertex B be x1, y1 and that of D be x2, y2. Now, AB is equal to BC. Why? These are sides of a square और square की sides equal होती हैं. So, here again we will be applying the distance formula. We can straight away square them first. AB square is equal to BC square. और अब हम find out करेंगे A और यहाँ पर है ये point B के coordinates. इनके बीच में x coordinates का difference find out करते हुए square करेंगे. Let us do it. x1 and minus of -1 it will become +1. So we can write it x1 + 1 whole square. फिर हम लेंगे y coordinates का difference y1 -2 whole square. This further can be written equal to, now we have to find the distance BC and then square it. So for this, this is the point B and this is the point C. ये है B के coordinates, ये है C के coordinates. पहले हम x coordinates का difference लेंगे x1 -3 whole square plus then y1 -2 whole square. ठीक है? और हमने स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लगाया कि हम पहले ही स्क्वायर कर चुके हैं. सो स्क्वेयरिंग एंड स्क्वायर रूट दीज टू आर इनवर्स ऑपरेशंस, तो वो यहाँ से हट गया है. नाउ जस्ट हैव अ लुक. y1 -2 होल स्क्वायर, y1 -2 होल स्क्वायर, लाइक टर्म्स हो गई दोनों ही तरफ. सो वी कैन ईजिली कैंसिल दीज टू टर्म्स एंड नाउ वी कैन सिंप्लीफाई. दिस विल बिकम x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 square will be 1. Here we will have x1 square minus 2 3s are 6 x1 plus 3 3s are 9. Again x1 square and x1 square will be cancelled, the like terms on both sides, and now we can bring this minus 6x1 to the LHS. We will get 2x1 plus 6x1. यहाँ पर रहेगा 9 और 1 को उधर ले जाइए, it will become -1. Again on simplifying, what we get? This will become 8 times x1 and here we will have 8. This gives us the value of x1. 8 upon 8, or we can say x1 is equal to 1. Okay, we have got the x coordinate of point B. Now we need to find the y coordinate of point B. Let us go further and take one more information from that square. बताइए अब हमने ये वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है 1. अब ये y1 भी तो निकालनी है, कैसे मिलेगी? यहाँ हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये डायगोनल जॉइन करते हैं AC. अब आप देखिए कि स्क्वायर का ये एंगल होता है 90 डिग्री और ऐसे में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी विच सेज दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस द स्क्वायर ऑफ बेस. ठीक है? सो वी कैन राइट हियर एज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब यही प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो वी बिगिन हियर. नाउ ट्राइंगल ABC is a right triangle with angle B equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem in triangle ABC, we have AC square equal to AB square plus BC square. Got it? Now again we will be applying the distance formula in all these three cases. AC. First of all, let us write all the coordinates once again so that we may do the question rightly. A is having coordinates -1 2 and C is having 3 2. So we write here A -1 2 and C is having 3 2 and B we are taking as 1
एंड y1, ठीक है, क्योंकि x1 तो हमें मिल ही गया है 1, तो वो हम 1 रिप्लेस कर रहे हैं. नाउ वी राइट देम हियर. AC, तो A और ये है C. Squaring, so we will not apply the square root sign also. This will become 3 minus of minus 1, that is 3 plus 1 whole square, and here 2 minus 2 whole square. This is AC square. अब हम लेंगे AB square. तो यहाँ से देखिए आप 1 minus of minus 1, it will become 1 plus 1 whole square, और फिर y1 minus 2 whole square प्लस BC के लिए हम लेंगे ये दोनों पॉइंट्स 1 minus 3 whole square प्लस y1 minus 2 whole square. ठीक है, simplify. 3 plus 1, it's 4. 4 square is 16. Here we will have 0, so no need to write 0. Now 1 plus 1 is 2. 2 square is 4. Here we will have y1 square plus 4 minus 4y1. Here we will have 1 minus 3 is minus 2, and minus 2 whole square is again 4. So we write here 4, and here we will have y1 square minus 4y1 plus 4. Now we need to simplify all these things. You will see y1 square. It is 2 times y1 square. ठीक है, here we have 16, so write it here. Then minus 4y1, it will become minus 8y1, and then 4, how many times it is? 1, 2, 3, 4. So 4 4s is 16, so we write here 16. Now this 16 and 16 will be cancelled, and here 0 will be left. So we can write 2y1 square minus 8y1 is equal to 0. Taking 2y1 as common outside, you will get y1 inside minus 4 equal to 0. देखिए 2y1 बाहर लिया, y1 स्क्वायर था, एक बाहर एक अंदर, माइनस यहाँ से 2 4 8 और y1 तो बाहर है ही. From here we get 2 values for y1. Just see, this implies 2y1 equal to 0 or y1 minus 4 is equal to 0. This implies either y1 is equal to 0 or y1 is equal to 4. So here we are getting 2 values for y1. Hence the coordinates of point B either 1, 0 और 1, 4. देखिए आप y1 की 2 वैल्यूज़ निकली हैं, x1 तो हमने पहले निकाल लिया था 1, तो यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स या तो 1, 0 हो सकते हैं या 1, 4. अब ऐसे में 2 केस बनते हैं. पहला केस हम लेंगे जब हम b के कोऑर्डिनेट्स लेंगे 1, 0, और अभी तो पॉइंट d के कोऑर्डिनेट्स निकालना रह गया है. अभी हमने सिर्फ पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं. ये या तो 1, 0 है या फिर 1, 4 है. अब पॉइंट d के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो यहाँ आप देखेंगे स्क्वायर के 3 पॉइंट्स तो हमें पता है, 3 वर्टिसेस तो पता है, और 4th वर्टेक्स निकालना है. ऐसे केस में अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्क्वायर की, और वो क्या है? वी विल बी यूजिंग द डायगोनल्स दिस टाइम. आप देखेंगे जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करें तो डायगोनल्स तो इक्वल होते ही हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में. एंड सो इन दिस केस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा. डायगोनल AC के लिए भी ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और डायगोनल BD के लिए भी ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. तो ऐसे केस में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ये मिड पॉइंट हो जाएगा डायगोनल AC का भी और डायगोनल BD का भी. तो ऐसे केस में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे AC और BD दोनों के लिए. दोनों सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करेंगे और उससे हमें पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. सो लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर इन दिस क्वेश्चन. We take the first case where we are taking coordinates of B as 1, 0, and in a square the diagonals bisect each other. So coordinates of the midpoint of AC will be equal to the coordinates of the midpoint of BD. Let us once again draw this figure so that everything is clear to us.
We have this point A, this as B, this as C, and this as D. We have drawn the two diagonals. This is 3, 2. This is minus 1, 2. This we have taken as 1, 0 or 1, 4. Here we are taking as 1, 0. And here we have to find D, x2, y2. The question is clear, I hope. Now, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. देखिए आप, ये ए सी है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं? दोनों तरफ के एक्स कोऑर्डिनेट्स को एडअप करके 2 से डिवाइड कर लीजिए. तो यहाँ से देखिए 3 और यहाँ से -1, इनको आप एडअप करेंगे. 3 + -1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 + 2 अपॉन 2. ठीक है, ये हो गए हमारे ए सी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. अब इसी तरह से बी डी के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम. वो कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 1, 0. अभी इसको रिमूव कर देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो. 1 + x2 और यू कैन राइट x2 + 1/2 और साथ ही साथ 0 + y2 या कह लीजिए y2 अपॉन 2. यही बचा. दिस विल इम्प्लाई 3 - 1, इट्स 2 अपॉन 2, दैट इज 1. And 2 + 2 is 4, 4/2 is 2. So 1 and 2, these are the coordinates of the midpoint of AC. और यहाँ से हमें मिल रहा है x2 + 1 अपॉन 2, y2 अपॉन 2. Now this implies that x2 + 1 अपॉन 2 is equal to 1. x coordinates equal हो गए and y2 अपॉन 2 is equal to 2. y coordinates equal हो गए. Now from here on simplifying, 2 1s are 2 and -1. Let me write it here in this way. 2 1s are 2. This will give you x2 equal to 2 - 1, that is 1, and y2 will be equal to 4. 2 2s are 4. So x2 is equal to 1 and y2 is equal to 4. Hence point D is 1, 4. ठीक है, 1, 4. गॉट इट. ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी. एक और केस लेते हैं जहां पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी वी आर टेकिंग एज 1, 4. अगेन इफ वी ड्रॉ द फिगर इट becomes helpful for us. It's A -1, 2. It's C with 3, 2. Here we have D, x2, y2 and this time B we are taking as 1, 4. और ऐसे केस में फिर से हम डायगनल्स को यूज कर रहे हैं. दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड अगेन coordinates of the midpoint of AC, they are equal to the coordinates of the midpoint of BD, and this time we are taking the coordinates of B as 1, 4. This is your case second. अब midpoint of AC, इसके coordinates कैसे मिलेंगे? 3 - 1, it will be 2, 2 upon 2, it's 1, and 2 + 2, 4, 4/2, it will be 2. तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं 1, 2. अभी हमने निकाले भी थे, देखिए आप इस तरह से 1, 2 हमें मिले ही थे. फ्रॉम हियर द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इट विल हैव द कोऑर्डिनेट्स x2 + 1 अपॉन 2 and the y coordinate will be y2 + 4 upon 2. y2 + 4 upon 2. These are the coordinates of the midpoint of BD. Now equate the x coordinates. This implies x2 + 1/2 is equal to 1 and y2 + 4 upon 2 is equal to 2. This will give you x2 equal to 1 and y2 equal to 2 2s are 4 minus 4, it will become 0. तो ऐसे केस में point D is 1, 0. तो क्या देख रहे हैं आप? जब आप B के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं 1, 4 तो D के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1, 0 और जब आप B के 1, 0 ले रहे हैं तो D के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1, 4. तो एक्चुअली जो दो वर्टेक्स बचे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, एक के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 0 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 4. आप चाहे B को अगर 1, 0 अलॉट करते हैं तो D के 1, 4 हो जाएंगे और अगर B को 1, 4 अलॉट करते हैं तो D के 1, 0 हो जाएंगे. सो एक्चुअली हियर वी कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस आर 1, 0 and 1, 4. So this is the final answer. Got it? Next we take question number 5. Question 5. The class 10 students of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land
for their gardening activity. So in Krishinagar there is a secondary school where the class 10 students have been allotted a rectangular plot for gardening activity. उन्हें एक rectangular plot allot किया गया है for gardening. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. The figure related to this question is this one, where you will see there is a rectangular plot and it has been given the name A, B, C, D. ठीक है? Now along the boundary of this rectangular plot there are gulmohar saplings planted at a distance of 1 meter from each other. 1 meter के distance पर gulmohar saplings plant किए गए हैं boundary पर चारों तरफ. Then what else has been said in the question? There is a triangular grassy lawn in the plot. As shown in the figure, the students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. तो आप देखेंगे यहाँ plot के बीच में एक lawn है, grassy lawn, जो कि है एक triangular region जिसे नाम दिया गया है PQR. और इस triangular region के अलावा जो area है वहाँ पर students को flowering plants के बीज बोने हैं. Now what has been asked in the question? Let us see. The first part is taking A as origin, find the coordinates of the vertices of the triangle. यहाँ देखिए आप, ये point A को origin मानते हुए ये जो triangular region है PQR, इसके जो vertices हैं P, Q और R, इनके coordinates find out करने हैं. तो जैसे ही आप A को origin मानेंगे तो ये जो side है AD, ये तो आप ले लेंगे as x axis, और ये जो side है AB, इसको y एक्सिस मानते हुए हम यहाँ पर पॉइंट्स P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? ये जो प्लांट्स हैं इनको हमने नंबरिंग कर दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, और आप यहाँ y एक्सिस के अलॉन्ग भी नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7. अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट P लें तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखिए आप कि क्या x कोऑर्डिनेट दिख रहा है. तो ये तो दिख रहा है 4, और y एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये हमें दिख रहा है 6. तो यहाँ से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं 4 and 6. नेक्स्ट इफ वी टेक पॉइंट Q, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखिए, x एक्सिस पर ड्रॉप करेंगे तो ये पॉइंट मिल रहा है 3 और यहाँ से मिल रहा है हमें 2. तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 2. इसी तरह से हम पॉइंट R को कंसिडर करते हैं. यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये x कोऑर्डिनेट तो मिल रहा है 6 और y कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है 5. सो वी कैन इजीली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एज 6 and 5. From here we have written the coordinates of the vertices of the triangle. We write here, taking A as origin and AD and AB as coordinate axis, the vertices of triangle PQR are P. P can be given the coordinates here 4, 6. Then Q can be given the coordinates 3, 2 and R has the coordinates 6, 5. I hope all this is very much clear. Axis, this is the word axis. I am writing it rightly again. Now, taking A as origin and AD and AB as coordinate axis, the vertices of triangle PQR are P 4, 6, Q 3, 2 and R 6, 5. I hope it is clear. Then what is the second part in this same question? What will be the coordinates of the vertices of triangle PQR if C is the origin? This time we have to take this point C as the origin and also then calculate the areas of the triangles in these cases. What do you observe? तो यहाँ पर पहले हमसे पूछा गया है इसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर अब हम C को ओरिजिन लें, अगर C को ओरिजिन लेंगे तो आपकी ये जो साइड है CB ये हो गई अब आपकी x एक्सिस और ये CD जो साइड है ये हो गई आपकी y एक्सिस. आपका जो सिस्टम है वो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, आप इमेजिन कर सकते हैं.
Now give the numbering. This is plant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Here we have 12. Here we have 13. ठीक है, और यहाँ पर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7. अब पॉइंट P को लें, अगर अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं पॉइंट P से, तो ये तो मिल रहा है हमें 12th प्लांट पर, और अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें y एक्सिस जिसे हम ले रहे हैं CD को, तो ये नंबर मिल रहा है हमें 2. तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 12 and 2. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट वी टेक पॉइंट Q के लिए फिर से हमें ड्रॉप करना होगा परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, और इस बार हम x एक्सिस ले रहे हैं ये ऊपर CB को, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए. ये हो गया आपका नंबर 13, और y एक्सिस इधर है CD, ये हो गया नंबर 6. तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं Q के 13 and 6. गॉट इट. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स पॉइंट R. परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो गया नंबर 10 आप देख सकते हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये हो गया नंबर 3. सो वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एज 10 and 3, and this gives us the coordinates of points P, Q and R when we are taking point C as the origin. So we can write the answer here, taking C as origin and CB and CD as coordinate axis. The vertices of triangle PQR are P, it is 12, 2, then Q, it is 13, 6, and R, it is 10, 3. Got it? Now what's the next question? Calculate the areas of the triangles in these cases. तो यहाँ हमने दो केस लिए हैं. पहला केस जब हमने पॉइंट A को ओरिजिन लिया तो हमें ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिले, और सेकंड केस जब हमने पॉइंट C को ओरिजिन लिया और तब हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले. अब दोनों ही केस में हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एंड देन वी हैव टू गिव what observation we are getting. Okay, so here we take the case where point A is taken as origin. We write here, when A is taken as origin, we have the coordinates of vertices as P 4, 6, Q 3, 2 and R 6, 5. We just now found these coordinates with respect to point A as origin, and now we will be finding the area of triangle PQR with respect to origin A. For this we will be using the formula to find the area of a triangle when the coordinates of its vertices are given, and we know it as half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Now using this formula we get it as half x1, it is 4, and then the difference of the y coordinates of the remaining 2 points, and we have to take care of the order in which we take the points. We will have 2 minus 5 plus x2, it is 3. So 3 into, here we have 5 minus 6 plus x3, it is 6, and then we have 6 minus 2. Now on simplifying, this will be equal to half into 4 into 2 minus 5, it's minus 3, plus 3 into 5 minus 6, it's minus 1, plus 6 into 6 minus 2, it's 4. Now again on simplifying, we get it equal to half. 4 into minus 3 is minus 12, 3 into minus 1 is minus 3, then 6 4s are 24. This will give us half into 24, and then minus 12 minus 3, it's minus 15. So here minus 15, and what is 24 minus 15? It's 9, and ultimately we get 9 by 2 square units. So this is the area of the triangle with respect to point A as origin. Next we find the area of the same triangle, but this time with respect to point C as origin. We write here, when C is taken as origin, we have the coordinates of vertices as P 12, 2, Q
Q 13 6 and R 10 3. अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे with point C as origin, and now we will be finding the area of triangle PQR with respect to origin C. This time we straight away apply the formula. We get it as half, then x1 it will be 12 into 6 minus 3, the difference of the y coordinates of the remaining points, then plus x2 it is 13 and then 3 minus 2 plus x3 it is 10 and then we have 2 minus 6. This will be equal to half. 12, 6 minus 3 is 3 plus 13, 3 minus 2 it's 1 plus 10 and 2 minus 6 it's minus 4. This will be half. 12 3s are 36 plus 13 1s are 13 minus we have 40. This will be half into 36 plus 13, it will be 49 and then minus 40. What do we get? 49 minus 40 it's 9 and then upon 2 square units. What we see? This area is same as we got with respect to point A as origin. देखिए यहाँ पर जब हमने ओरिजिन लिया पॉइंट A तब भी एरिया आपका आ रहा है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, और जब हमने ओरिजिन लिया C तब भी एरिया है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये आना भी चाहिए क्योंकि ट्रायंगल तो बेसिकली सेम है. हम दोनों ही केस में ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, और हम कोई भी पॉइंट को ओरिजिन लें और अकॉर्डिंगली कोई भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, आफ्टर ऑल जो रीजन कवर हो रहा है उस ट्रायंगल से वो तो सेम ही है. तो बोथ वेज वी शुड गेट द सेम एरिया फॉर द सेम ट्रायंगल and we are getting it. So what observation we are getting here? Areas are the same in both cases because triangle PQR remains the same. Triangle तो same ही है ना, तो उसके द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है वो सेम ही आएगा, no matter which point is taken as origin. Got it? With this we complete the first 5 questions from exercise 7.4. I hope all these questions are very much clear to you. In our next video we will be completing this exercise, and with it we will be completing this chapter. It's bye for now. Have a nice day.